keep tracking all the developments. There'll be more reactions coming in. Moving on, the centre has announced Padma Awards 2026, honouring India's icons and unsung heroes. A total of 131 civilians have been recognised across public affairs, cinema, social work, medicine, literature, education and sports. This includes 5 Padma Vibhushans, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri awards. Let's take a look at the names on this year's list. So among the Padma awardees are late veteran actor Dharmendra, former Kerala Chief Minister V.S. Achyutanandan, former Supreme Court Judge K.T. Thomas, Malayalam icon Mammootty, Bollywood star R. Madhavan, television legend Satish Shah and celebrated singer Alka Yagnik. But not just the prominent personalities. Continuing the trend since 2014, the Padma Awards once again spotlights ordinary Indians with extraordinary contributions. 45 individuals have been recognized as unsung heroes, including a former bus conductor who built the world's largest free access library, a Mumbai doctor who established Asia's first human milk bank, and a 90-year-old tribal musician preserving a rare traditional instrument. Have a look at the we'll play out the exclusive interview with Vijay Amritraj as well, who has been conferred the Padma Bhushan. But on your screens is a list of individuals who've been honoured with the Padma Awards. This is the list of the Padma awardees 2026. Not just prominent personalities from all fields, but also unsung heroes have been honoured, felicitated with Padma Awards for the year 2026. Let's go across to Niyamika, who's getting us more details. Niyamika, there's a list of 131 civilians who've been recognized from various fields. But you know what's unique and special is a tradition that has been continuing since 2016, the unsung heroes who've been felicitated as well. Yes, indeed. But there has been a beginning of politics regarding this entire matter. Parties are mainly there seems to be a problem in the line connecting with you. We'll fix that and we'll come back to you. The politics that Niyamika is talking about. Politics has erupted over Padma Awards. Congress has linked this to the upcoming elections. Out of the total 131 Padma Awards, 38 have been given to those from the poll-bound states, something that the opposition has objected to. Let's take a look at the numbers and then we'll get you the reactions. This is the difference between a secure, statesman-like figure like Prime Minister Modi and an insecure darpok, in the words of Shakil Ahmed, like Rahul Gandhi. On the one hand, the Gandhi Vadra family has only given Bharat Ratnas to itself, denied Ambedkar ji and Sardar Patel and many stalwarts of the Congress this honour. But on the other hand, when Prime Minister Narendra Modi ji got an opportunity, he made the Padma Awards and the Bharat Ratna People's Awards, because Modi government is not insecure. On the other hand, Rahul Gandhi treats his own senior leaders in such a shabby manner. You have a darpok, insecure Rahul Gandhi who only and only puts himself first, never the party or the country first. कांग्रेस पार्टी को पद्मा अवार्ड से यही चिढ़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर जो देश के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, उसको पद्मा अवार्ड मिलता है। जब गांधी वाड्रा परिवार की सरकार थी, जो गांधी वाड्रा परिवार का लॉयलिस्ट था, उसको पद्मा अवार्ड मिलता था। इनको इस बात से चिढ़ है कि इस वक्त भले बंगाल हो, भले तमिलनाडु हो, भले असम हो या देश का कोई भी राज्य हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनसंग हीरोज को रिकॉग्नाइज करती है। गांधी वाड्रा परिवार के चाटुकारिता से शिफ्ट होकर आज की तारीख में पद्मा अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में पीपल्स पद्मा बन चुका है। जो भी देश और जनता के करीब होता है, उससे गांधी वाड्रा परिवार और कांग्रेस पार्टी को हमेशा चिढ़ महसूस होती है। So while Congress linked this to election, Shiv Sena UBT has another issue with the award. Shiv Sena UBT Sanjay Raut strongly criticized the decision to confer a Padma honour upon Bhagat Singh Koshyari, the former governor of Maharashtra. He claimed that the man who murdered democracy to install BJP Shinde government in the state of Maharashtra is being honoured by the Modi government. Listen in. राजभवन एक राजनीतिक अड्डा बनाया था कोश्यारी जी ने। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करके एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे व्यक्ति को आप
लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करने के लिए इनाम देते हो पद्म भूषण का, तो महाराष्ट्र को ये मंजूर नहीं है। यही कोश्यारी जी है, राज्यपाल पद पर रहते हुए ये महाशय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया था और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अवमान किया था। ऐसे व्यक्ति को आप पद्म भूषण देकर उसकी इनाम देते हो, हमें मंजूर नहीं है। Reacting sharply to this, Bhagat Singh Koshyari said that he does not work for anyone's praise or criticism. He works for Bharat Mata. भारत सरकार इस पद्म पुरस्कार को जब वो चुनते हैं, हर एक के मेरिट पर वो चुनते हैं। विरोधक की टिप्पणी जो आज विपक्ष दल इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको करने दो। कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निंदा करे, इसके लिए मैं काम नहीं करता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरे लिए भारत माता सब कुछ है, उसी के लिए हम काम करते हैं, उसके संतानों के लिए काम करते हैं और उसके लिए करते रहेंगे। अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अगर उनको बुरा लगता है तो।